Just let me know once it's there. Yeah, yes, sure. So it has been live now, and let's start. So welcome you in today's session. I am Dr. Shubha Dwivedi. Welcome you all in today's session on accelerators, incubation opportunities for students and faculties, early stage entrepreneurs. As we all are aware that this year our country is celebrating its 75 year of independence, and so it is declared by Ministry of Education Institution Innovation Cell AICTE that IIC is going to celebrate activity name Innovation and Entrepreneurship in Higher Education Institutions for Atmanirbhar Bharat Azadi Ka Amrit Mahotsav. In this regard, in this reference, we are at IIMT University organized one session for early birds entrepreneurs, for the students, for the faculty, and I'm highly thankful to the Marwari Catalyst who accept our invitation and being expert speaker for today's session. Actually, we are continuously in the mode that we are going to organize such many more activities in coming August and September. So let's start with the inaugural note that IIMT University has been established under Uttar Pradesh Act number 32 of 2016, and it is the best private university of North India and among top 10 universities in UP. The university has a rich legacy in the field of education and exemplary recognition in corporate, academia, and public at large. We are committed to provide a world-class education. In addition, the university inculcates an environment of innovation, research, and development coupled with values so that its students become tools for socio-economic change. I welcome and pay my regards to Honorable Chancellor of IIMT University, Shri Yogesh Mohanji Gupta sir. He is a man of vision, and under his esteemed leadership, the university is setting milestones. His vision consists to promote Indian culture and research-based education to the new generation. Ever-changing technology and proliferation of new ideas pose new challenges to the university around the world to develop and deliver innovative curriculum to stay relevant. I welcome Professor Deepa Sharma, Vice Chancellor of IIMT University. Her vision clearly states that at IIMT University, we believe in the saying knowledge is the power. Our main objective has been developing the young learners on the solid foundations of ethical and moral values. I welcome all the directors, dean, faculty of IIMT University and outside of the university in today's session. Today's eminent speaker is Dr. Sushil Sharma, and I am reading his profile now. I'm really very much fascinated when I read this line: no guts, no glory, no legend, no story. It's really very amazing. No guts, no glory, no legend, no story. Starting the entrepreneurial journey as a struggling funded founder, angel investors to a startup ecosystem player, facing multiple failures to bouncing back and revolutionizing the startup ecosystem in the tier 2nd and tier 3rd cities of India. Professionally, he is an angel investor. He has successfully channelized his experience with utmost intelligence and has the following achievements recorded under his name. He is the Rajasthani brand ambassador by Rajasthani Foundation. He is convener of ESC Rajasthan chapter. He is featured in top 10 Rajasthan for business and startup industries by Dainik Bhaskar. He is in the board of advisory AI SEC Rajasthan for last 6 years. He is advisor to set up IT Park in Western Rajasthan by Government of Rajasthan in 2011. He is awarded at IIT BIS Bangalore by IT Minister of Government of India. He is globally ranks under 20 as the most innovative and fastest growing founders. Amazing, sir. Family means he started 50 plus startup portfolios, 100 plus angel investors, and 100 plus co-founder club. He is representing India at the
IT delegation at Electronics and Computer Software Exports Promotion Council in more than 10 countries. As for the founding vision of Marwari Catalyst is concerned, Mr. Sushil Sharma believed that most of the innovators and talented minds are from Tier 2 and Tier 3 cities of India, but because of lack of complete ecosystem and proper work culture and opportunities, the younger generation migrates from smaller cities to larger cities. With future plans of launching the next big thing and fulfilling the dreams of many, Mr. Sushil Sharma is passionately contributing its bit in transforming India into an unstoppable economic powerhouse. So it's amazing, sir. It's amazing profile. Now I'm not getting much of time, and I'm inviting you for a session talk. Thank you. Thank you so much, ma'am. It was wonderful to hear from you such a good things. And thanks, IIMT University College for inviting me for the session. It has been a pleasure, speaking and interacting with students. Although it's offline events are much better because, you can interact, you can see the vibes and, you can make a lot of friends. But any which ways, I invite all the students to send me a connect over a LinkedIn so that we can connect. So thank you once again, and let's start for the session today. The opportunities for students, faculties for the early stage entrepreneurship. I'm Sushil Sharma, founder CEO of Marwari Catalyst. So I just want to give you another introduction that I belongs to Delhi NCR, specifically a place near to Ghaziabad called Jewar. And born in Karnataka, a place called Bidar, and now lives my life in Rajasthan. I've chosen Jodhpur as that. My dad was in Indian Air Force. So I was not very academically strong student. After my graduation and post-graduation, I've started my first venture as a cyber cafe, which I entered in 2003 and 2004. I have exited. 2005 and 8, I have started a website development company, then software development company, that into real estate, and acquired an agriculture farmhouse in Ethiopia, that is east of Africa. And 2017 was my journey started when I decided to enter into startups. I failed in ready-to-eat business, video streaming business, subscription automation for a cable industry, and uniform industry. These are the four first pilot projects which I've initiated when I wanted to enter into startup industry, and this was early 2017. So you can understand that the first 6-7 good businesses and good exits, continuously for a year, 4 failures. And 2019 was the time when I've decided that I'll do something good, and I started this company called Marwari Catalyst. So, yeah. Yes, sir. You can, sir. Then in June 2019, after my failures and success, I wanted to start something bigger, larger, and which can be recognized in the global market. And that's where I started Marwari Catalyst. I name it as MCATS. And with around 20 professionals, we have started this company in June 2019, which are largely successful startup founders. Then we have a couple of chartered accountants, couple of IITians, and couple of industries, so that we can do the best to the industry. And now we are a 40 plus investments as on today, active startups with three full and 1 part exit. The couple of more details which I mentioned. Ma'am has also already mentioned that I represent Rajasthan as a brand ambassador for Rajasthan Foundation, which takes care of all the Marwadis lives outside Rajasthan. Then I am also part of ESC, Electronics and Software Export Promotion Council for Rajasthan. I have also been actively participating in ISEC. ISEC is world's biggest youth organization for global student exchange program. I have been awarded by different places and been active on the social media. So couple of partners and shareholders, from technology to education to startup founders, are the shareholders of the company. Just want to give you another background of the startup portfolio which belongs to us. That is Yearbook Canvas, ClickoCart, MentorCart, Tinkerly Labs, Zoworld. Couple of sessions done by me. Now, coming back to the main topic of the session, the opportunities for students for early stage entrepreneurship. So let me go back and tell you some background. What specifically had happened in last 2.5 years? Why startups and new entrepreneurship? Specifically, everybody is talking at students into students coming back and actively participating in the industrial area.
So I give you a story of pre-COVID and after COVID. So pre-COVID, if you see a lot of videos and transactions, a lot of people will say that there is a startup founder. The picturization of a startup founder or a new early stage entrepreneurs were like one room with 3 students living together, no managed activity as a lack of fund. Now the other side of it, after COVID, we have seen that if it's a startup founder, that's become a first preference person who is going and speaking at different platforms, somebody who has a lot of flaunt value, going attending a lot of activities and with a lot of money. So what has happened actually before COVID and after COVID is that, IT and startups have given a very strong proposition after this COVID, because हम सब लोगों ने देखा कि कोविड के पीरियड में IT ने बहुत स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन किया, एक सबसे बड़ी बात। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था वो हमारा था कि कोविड के बाद स्टार्टअप्स की एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रांग हो गई पब्लिक एट लार्ज में। थर्ड important aspect है, government started recognizing startup in a good way because there are a lot of contribution in the economic development for the society. Another case study, there's a lot of reverse brain drain, जो भी बहुत सारे लोग US, UK और दिल्ली, बॉम्बे, बैंगलोर बड़ी सिटीज में रहते थे, वो सारे लोग छोटी सिटीज में भी आने लगे। तो हमारे सब स्टूडेंट्स के लिए, ये हमारे लिए सबके लिए क्यों अपॉर्चुनिटीज बहुत स्ट्रांग हो गई अभी आज की तारीख में आना, क्योंकि बिफोर कोविड और आफ्टर कोविड में स्टार्टअप्स की एक्सेप्टेंस बढ़ गई, छोटे छोटे जो इन्वेस्टर्स हैं वो स्टार्टअप इंडस्ट्री में आने लगे, इस पूरी इंडस्ट्री का बहुत स्ट्रांग पार्टिसिपेशन हुआ। अगर मैं बोलूँ तो ग्लोबली यूनिकॉर्न कंपनीज 1000 है। इंडिया हैज बिकम द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड फॉर स्टार्टअप, थर्ड लार्जेस्ट मार्केट फॉर स्टार्टअप्स इन द वर्ल्ड। सो अगर हम यूनिकॉर्न एक टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, सारे स्टूडेंट्स को मैं शेयर करता हूँ, कोई भी कंपनी जो $1 बिलियन मतलब लगभग 7500 करोड़ की जो कंपनी हो जाती है उसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो ग्लोबली 1000 यूनिकॉर्न कंपनीज हुआ करती थी, जिनमें से अब इंडिया में 100+ अराउंड 105 यूनिकॉर्न कंपनीज है। मैं बहुत सारे लोग स्टार्टअप्स के लिए और नए न्यू एज बिजनेसेस के लिए क्रिटिक है, लेकिन फिर भी अगर मैं बोलूं तो 197 कम्युनिकेशन इज ग्रोइंग, बैजू हैज बिकम अ बिग कंपनी। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपना काम कर रही हैं। ओयो रूम्स हैज बिकम बिग, ओला हैज बिकम बिग, जोमेटो हैज बिकम, सो लॉट ऑफ एक्टिविटी, क्रेड हैज बिकम अ $2.2 बिलियन कंपनी। बहुत सारी कंपनीज काम कर रही है, क्रिटिकल होते हुए भी स्टार्टअप्स में बहुत अच्छा ग्रोथ हम लोग देख पा रहे हैं। अगर मैं एक और एग्जांपल शेयर करूं जो शायद हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, कि ये जितने भी रिच कम्युनिटी, रिचेस्ट द पीपल इन द इंडिया हैज बिकम फ्रॉम अ स्टार्टअप। तो अगर हम लोग बैजू के फाउंडर को देखेंगे तो ये भी बहुत यंग है, पेटीएम के फाउंडर को देखेंगे तो ये भी बहुत यंग है, ओयो का फाउंडर जो है रितेश अग्रवाल, वो तो लेटेस्ट अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो यंगेस्ट बिलियनियर इंडिया में से आया था। ओला का फाउंडर देखा जाए, स्विगी का फाउंडर देखा जाए, ये सारे यंगस्टर्स हैं जिन्होंने अपने डिफरेंट माइलस्टोन्स बिल्ड किए हैं, और डिफरेंट माइलस्टोन्स बिल्ड करने के बाद ये लोग सक्सेसफुल यूनिकॉर्न कंपनी या सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर्स को प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। तो आज की तारीख में सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो ये है कि अगर हम लोग देखते हैं, ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है ये यंगस्टर्स के लिए आ रही हैं। और वो क्यों आ रही है? क्योंकि यंग जो बियॉन्ड कैलकुलेशन सोचने की जो कैपेसिटी है वो स्टूडेंट्स की होती है, पहला। दूसरी बात, इंडिया में जो यूथ ओरिएंटेड जो कम्युनिटी है वो बहुत स्ट्रांग है, मतलब इंडिया में जो यंग क्राउड है वो बहुत स्ट्रांग है। तो यंगस्टर्स की क्या डिमांड है, टेक्नोलॉजी को कैसे यूसेज किया जाता है, उसको कॉलेज के स्टूडेंट्स से ज्यादा अच्छा कोई भी नहीं देख सकता है। तीसरा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो देखते हैं कि जितने भी चाहे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव हो फॉर स्टार्टअप्स और मे बी बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप इन द हायर एजुकेशन इज ऑल्सो ग्रोइंग अ लॉट in India. And at the same time, lot of events and lot of efforts also being done by the colleges as well as the government to promote entrepreneurship in the college time. So ये दोनों ही एस्पेक्ट को अगर आप लोग देखते हैं तो हमारे लिए जो है ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट रहता है। एक और जो मैं बोलता हूँ, रीजन ऑफ ज्वाइनिंग स्टार्टअप्स इन 2022 and what we can gain as a student is startup or businesses are not boring. It is not like a regular culture which is usually a case. Second important aspect here, startup working culture. The working culture in startups is so good that you learn a lot of things. It is flexible, it is very recognized,
द अदर इम्पोर्टेंट इज इट इज यूजुअली फ्लेक्सिबल बाय नेचर. सो अगर मैं आपको देखता हूँ कि जितने भी द वर्किंग कल्चर, द एनवायरमेंट, द पॉलिसी मेकिंग, दिस इज वेरी फ्लेक्सिबल सो फार एज अ स्टार्टअप. It is also very innovative of thinking, because startups is usually all about innovative activity, and specifically these startup founders and the cultures always think out of the box, and it is a regular process. It is not a one time activity. It is always a continuous process. तो जो भी हम लोग startup community का से connected रहते हैं youngsters के लिए, उनके लिए बहुत बड़ा advantage है कि ये बहुत एक different culture है, एक बहुत बड़ा different environment है, और ये environment बहुत innovative भी है, और इसमें एक लार्जर कम्युनिटी जो है, स्टार्टअप कम्युनिटी है, उसके साथ भी कनेक्ट होने का मौका मिलता है. प्रोफेशनली बहुत एडवांटेज है. अगर आप लोग अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में अगर जुड़ते हैं, अगर स्टूडेंट की तरह जुड़ते हैं, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज, चाहे तो हम को फाउंडर बने, चाहे हम लोग किसी स्टार्टअप में ज्वाइन करें, तो हमारे लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप प्रोफेशनल जो रिफाइनमेंट है वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है. और कॉलेजेस के साथ जितने भी सेशंस होते हैं, कितने भी एक्टिविटीज होती है, उसमें इसलिए स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि आपको सीखने को भी बहुत मिलता है और आपका नेटवर्क भी बहुत होता है, क्योंकि ये लोग फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ज्यादातर. तो इनके साथ कनेक्ट होना और इनके साथ रिलेशनशिप बिल्ड करना हमारे लिए प्रोफेशनली और पर्सनली दोनों ही बहुत अच्छी बात है. तो मुझे आज की तारीख में लगता है कि आज अगर मैं आपको एग्जांपल एक केस स्टडी शेयर करता हूँ कि हम लोगों ने हमारी 3-4 कुछ स्टार्टअप्स की केस स्टडी मैं आपको शेयर करता हूँ. उसमें क्या कर सकते हैं, क्यों किया हम लोग पहले स्लैम बुक्स बनाया करते थे, अगर हमको याद होगा तो. हम लोगों ने, हमारी एक कंपनी है ईयर बुक कैनवस, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पहले एक डायरी लेते थे, एक दूसरे की फोटो उसमें लगाते थे, उसमें एक दूसरे का कमेंट्स लिखते थे, जिसको हम लोग स्लैम बुक की तरह यूज कर सकते हैं. बिकॉज स्टूडेंट्स, हम समझते हैं कि आज की तारीख में डिजिटलाइजेशन, मोबिलाइजेशन और इंटरनेट की कनेक्टिविटी की वजह से हम लोगों ने सेल्फ पब्लिशिंग ईयर बुक बनाने की एक कंपनी बनाई, जिसका नाम है ईयर बुक कैनवस, और इसको हमने एजुकेशन वर्टिकल में प्रमोट किया. तो मेरा एक स्ट्रॉन्ग सबमिशन है कि क्योंकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को स्टूडेंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझता है, स्टूडेंट्स के बीच में टेक्नोलॉजी का एक्सेप्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है. थर्ड, आउट द बॉक्स थिंकिंग कैपेसिटी होती है. और लास्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है कि इनका सिंक्रोनाइजेशन करना और इसके लिए एफर्ट्स करने की जो सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग कैपेसिटी है, वो स्टूडेंट बाय एंड लार्ज होती है. तो मुझे क्या लगता है कि चाहे हमारी एक स्टार्टअप है हॉबिट नाम से, जिसमें हम लोग हॉबीज प्रमोट कर रहे हैं, चाहे हम लोग मेंटर कार्ड करके मेंटरशिप प्रमोट कर रहे हैं, मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के लिए, अर्ली स्टेज स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेबिलिटी फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बहुत स्ट्रांग है. दूसरा, अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर आता है जो 45 प्लस का है, 50 प्लस का है, तो उसके लिए अगर इन्वेस्टर्स है, तो दे विल नॉट बी एज ओपन एज फॉर अ कॉलेज स्टूडेंट हु इज पासिंग आउट. Second, as a student, you do not have a worry of failure. So that's also a strong proposition for you. Third, all the students will not become the startup founders, but a lot of students can join startups. As I said, there are so many advantages to it. And there is a very strong terminology called stock option. तो मुझे क्या लगता है कि सारे स्टूडेंट्स, जितने स्टूडेंट्स पॉसिबल हो, वो लोग स्टॉक ऑप्शंस को ऑप्ट कर सकते हैं. स्टॉक ऑप्शंस एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी है, जिसमें आप लोग ई शॉप्स, किसी स्टार्टअप में अगर हम खुद स्टार्ट नहीं करते, तो हम लोग उस कंपनी में एम्प्लॉय शेयर्स ले सकते हैं, क्योंकि इसमें और तो मतलब ये एक अलग ही टर्मिनोलॉजी है, जिसपे मेरे को लगता है मैम को एक दिन बोलूंगा कि ई शॉप्स फॉर स्टूडेंट्स के ऊपर एक वर्कशॉप करनी चाहिए. और एट द एंड ऑफ द डे बहुत इनोवेटिव आइडियाज के साथ इसमें हम लोग काम कर सकते हैं. सेम वे एज आई ऑलरेडी मेंशन दैट कॉलेज में भी बहुत स्ट्रॉन्ग प्रपोजिशंस हो रही हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करा रहे हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं जिनको लिया जा रहा है. तो मुझे लगता है कि आज की तारीख में स्टूडेंट्स के लिए, स्टूडेंट्स के पास जितनी अपॉर्चुनिटीज हैं अर्ली स्टेज बिजनेस में और एंटरप्रेन्योरशिप में ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, ग्लोबल मार्केट का सेंटिमेंट बहुत स्ट्रांग है, टेक्नोलॉजी का तो आजकल सारी बच्चे ही आजकल टेक्नोलॉजी का यूसेज कर रहे हैं. और साथ में अभी एक बहुत पुरानी कहावत होती है, जब एक हाथ से दूसरे हाथ में बॉल जा रही होती है, तो छीनने का सबसे अच्छा समय होता है. तो जितने भी ट्रेडिशनल व्यापार और व्यापारी हैं, वो न्यूएस्ट टेक्नोलॉजीज को सीखते सीखते अडॉप्ट करते करते टाइम लेंगे, और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना उनके लिए एक चैलेंज होता है. और ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है सारे ही स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो उसको एक्टिवेट कर सके
और उसमें अपना पार्टिसिपेशन ला सके और इसका एडवांटेज उठा सके और थोड़ा आउट ऑफ बॉक्स सोच सके और प्रोफेशनल नेटवर्क कर सके। तो मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग सबमिशन यही है कि ये इट्स एक्चुअली अ बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, स्पेसिफिकली द यंगस्टर्स, टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ अ इकोसिस्टम, to increase their networking and to bring something out of the box. The only case study where I've started my presentation is, don't worry about your failures. Try to create the best of the network possible. Try to learn a lot and try to be optimistic for the industry. Thank you so much for hearing. And there, if any questions are there, I'm open for the question answer. थैंक यू सो मच सर। सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं इस समय मेरे खुद के भी दिमाग में, जैसे कि आपने एक वर्कशॉप के लिए बोला कि कोलैबोरेटली वी कैन ऑर्गेनाइज वर्कशॉप, तो लेट मी नो दैट आल्सो कि what are the prerequisites for the organizing of that workshop? Means it should be in offline mode or in online mode. देखिए मैम, एक बहुत जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैंने आपको शेयर किया कि आजकल मैंने बोला हर स्टूडेंट स्टार्टअप शुरू करे या क्या स्टूडेंट्स को स्टार्टअप में पार्ट। Hello, am I audible? Am I audible? Am I audible? Am I audible, sir? Hello, Anshu ji. Hello, Anshu ji. Hello. Hello.
I'm sorry मैम, थोड़ा इंटरनेट चला गया था, बारिश हो रही है जोधपुर में बहुत ज्यादा। ओके, इट्स ओके सर, नो इश्यूज है। मेरा जो क्वेश्चन था कि हम किस तरीके से मींस आप जैसे आपने बात की वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने की। हाँ, जैसा मैंने आपको बोला कि स्टूडेंट लाइफ में जरूरी नहीं है कि हम लोग सब लोग स्टार्टअप, पहले एक बहुत अच्छा एक तरीका बोला था कि बिफोर यू वांटेड टू स्टार्ट अ बिजनेस यू शुड गो एंड जॉइन सम कॉर्पोरेट सो दैट यू कैन लर्न। ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस थी। तो ऐसे ही अगर ना अपना स्टार्टअप शुरू करने से पहले, या स्टूडेंट्स के लिए दोनों ऑप्शन है, स्टूडेंट्स अपना और कंपनीज को ज्वाइन कर सकते हैं। और ई शॉप्स जो एक नई टर्मिनोलॉजी है जिसमें सारे एम्प्लॉयज के लिए कुछ शेयर्स निकाले जाते हैं, उसमें ये बहुत छोटा सा एक 45 मिनट्स का ऑफलाइन सेशन रखना चाहिए आपको, ताकि स्टूडेंट्स के बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो सके। और ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ताकि स्टूडेंट्स बाकी सब बड़ी स्टार्टअप्स को या अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स में एज एन एम्प्लॉय ज्वाइन करें, ताकि उनके भी कुछ शेयर्स भी हो सके, और वो एक ओनरशिप का एक मोमेंटम भी आता है। तो इसके ऊपर एक ऑफलाइन वर्कशॉप आपको रखना चाहिए, मुझे लगता है। बिल्कुल, मैं जरूर हायर अथॉरिटीज को रिकमेंड करूंगी। और एक क्वेश्चन और भी है सर कि जैसे हम स्टार्टअप्स के लिए जाते हैं तो इनिशियली जो हमारे पास सीड मनी है वो कितना होना चाहिए, मतलब हम देखिए, वैसे तो सारी स्टार्टअप्स का कौन सी कैटेगरी में स्टार्टअप है और क्या उसका बिजनेस मॉडल है, क्या उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, क्या R&D चाहिए। बट मुझे फिर भी लगता है कि एक अर्ली स्टेज जो स्टूडेंट्स लाइफ में जो एक जो स्टार्टअप होता है, उनको एक 20 से 25 लाख रुपए का एक अमाउंट होता है, तो उनके लिए एक्सपेरिमेंट करना एक बहुत अच्छा होता है। और आज की तारीख में गवर्नमेंट की सीड इंडिया, मतलब इन्वेस्ट सीड इंडिया करके एक स्कीम चल रही है। बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट की चल रही हैं जिसमें स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट एंड दे कैन ब्रिंग थिंग्स ऑन टेबल। तो बहुत अच्छा अभी समय है स्टूडेंट्स के लिए। और एक 20 से 25 लाख रुपए अगर होते हैं तो एक अच्छा एक कॉर्पस है जिसमें स्टूडेंट्स एक चीजों को एक्टिवेट करके देख सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट, मतलब मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स आर आस्किंग अबाउट दैट कि मैम हमें क्या इनोवेटिव आइडिया से ही स्टार्टअप किया जा सकता है, या जो एस्टेब्लिश स्टार्टअप्स हैं, मतलब एस्टेब्लिश जो कंपनीज हैं उनके लिए कुछ न्यू डिजाइन या कुछ इस तरीके से किया जाता है, मींस इंटरमीडिएट डिजाइन प्रिपरेशंस और इस तरीके से भी कुछ किया जा सकता है मैम इस वैसे तरीके की भी तो, कुछ। हाँ, तो वैसे तो देखिए मैम, हमेशा कोई भी स्टार्टअप अगर यूनिक आइडिया होता है तो अच्छा होता है। और या यूनिक आइडिया नहीं भी होता है तो उसको ऑपरेट करने की स्टाइल अलग होनी चाहिए। तो जैसे अगर हम लोग देखा जाए, अगर ओला है तो ओला कुछ नया नहीं कर रहा है तो टैक्सी भी कर रहा है। बट अगर हम लोग बहुत सारे आइडियाज को अगर टेक्नोलॉजी के साथ इनेबल कर देते हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो मुझे लगता है जरूरी नहीं है कि आप नया आइडिया कर रहे हो, उसका नया न्यू एग्जीक्यूशन प्लान होना चाहिए, इकोनॉमिकल एग्जीक्यूशन प्लान। देयर मस्ट बी आंसर ऑफ व्हाई दिस स्टार्टअप। तो अगर उसको आंसर अगर हम दे पाते हैं तो वो, चाहे वो इनोवेटिव आइडिया हो चाहे एग्जिस्टिंग आइडिया हो, चलेगा। अच्छा, जैसे कि AICT का एक काफी मेगा स्टार्टअप हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करते हैं युक्ति, और अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने भी बहुत बड़ा हैकाथॉन ऑर्गेनाइज किया था लास्ट ईयर, आइडियाथॉन। तो उसमें बहुत सारे आइडियाज जो थे बच्चों ने सबमिट किए थे, स्टूडेंट्स ने। तो अभी मतलब उसमें भी एक क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि उनको आइडियाज को किस तरीके से यथार्थ के मींस ऑन द प्रैक्टिकल ग्राउंड किस तरीके से लॉन्चिंग किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए। देखिए मैम, वैसे तो जितने भी आइडियाज हैं, पहले बात तो मुझे एक बात आपकी बहुत जो इम्पोर्टेंट लगती है कि किसी भी स्टूडेंट को अपने इन आइडियाज को कैजुअल नहीं लेना चाहिए। एक तो सबसे ज्यादा आजकल इंडिया में कहते हैं ना, हर छोटे से छोटा आदमी स्टार्टअप्स के साथ एसोसिएट होना चाह रहा है, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटीज है, गोल्डन अपॉर्चुनिटीज है फॉर एवरीबॉडी। तो मुझे लगता है कि अभी अपने को कोई भी आप आइडिया पे काम कर रहे हो, अगर हैकाथॉन में पार्टिसिपेट कर रहे हो कॉलेज के इंक्यूबेशन सेंटर में, तो उसको कैजुअल नहीं लेना चाहिए। यू हैव टू बी वेरी सीरियस अबाउट इट। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम वन गुड पर्सन कैन कम एंड जॉइन यू एज अ co-founder and can invest you money. That is one. Second, लॉन्च करना जो है आपको एक प्रोटोटाइप, मतलब बहुत छोटे एक मार्केट साइज को लेना चाहिए, अपने सिटी को, अपने स्टेट को, या अपने कॉलेज को, या अपने क्लोज डोर कम्युनिटी को, जहां पर आप उस आइडिया को वैलिडेट करा लें। क्योंकि अगर आपका आइडिया वैलिडेटेड हो जाता है तो उसके लिए आपके इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना और आपका खुद का मोटिवेशन, दोनों के पर्सपेक्टिव से वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। तो उसको कर लेना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू सो मच सर। बहुत सारे क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अभी समय को देखते हुए, और मुझे लगता है कि आपका भी काफी बिजी शेड्यूल होगा, तो जी सर, थैंक यू सो मच फॉर accepting our invitation and be here and part of this today's session. Actually ये सेशन बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज सुबह ही AICT का जो मेल है वो मिला है, जिसमें ये है कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक जो कि हम लोगों ने अभी चूज किया है, सेशन ऑन एक्सेलरेशन फॉर द अर्ली बर्ड स्टार्टअप्स।
तो यही उनका मोटिव यही है कि चूंकि वी आर सेलिब्रेटिंग द 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, आजादी का अमृत महोत्सव, तो उसमें भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके से जो स्टार्टअप और इनोवेशन जो कल्चर है उसको किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, इसके ऊपर एक सेलिब्रेटेड टॉक जो थी वो ऑर्गेनाइज करनी थी। तो ये टॉक उस मोटो को भी फुलफिल कर रही है मुझे लगता है बहुत हद तक। और थैंक यू सो मच, और डेफिनेटली हम ऑफलाइन वर्कशॉप आपके साथ जरूर करना चाहेंगे, एंड we are ready to collaborate with you also. Thank you so much, sir.